everyone, welcome to our channel Knowledge of. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your reasoning class, and that reasoning class that we have to start with puzzle test here. Sorry, this is not puzzle test lecture, this is the sequential output tracing, जिसे हम SOT बोलते हैं. Okay, so this is the lecture of sequential output tracing here, and this is the class number 114. As I had told you about that, we had cover up in analogy, that we reasoning analogy topic, classification, then we had cover up the coding and decoding, blood relation, sequences, series completion, and then of course this puzzle test we had cover up. So all total we had cover up 6 topic in reasoning, and now we are continuing with the 7th topic, that is SOT, जिसे हम sequence output tracing बोलते हैं. From now we will discuss from the 114 class, we will discuss SOT, that is a sequential output tracing, and this is the one class where I will complete SOT all the possible questions with their method, with the possibility questions, whatever the examinee can ask. So all that we'll discuss in this class only. And first of all, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. नाउ इफ़ यू एम टॉकिंग अबाउट द SOT, तो पहले तो हम जानेंगे कि व्हाट इज़ SOT, SOT होता क्या है, किस तरह से. So in reference to SOT, sequential output tracing, first you have to understand about sequential output tracing, then accordingly you can perform those. And here we have, so here in the sequential output tracing, first you have to understand what it is and how we have to solve these questions, then we move with next one. So in the sequential output tracing, in this type of a question, a message comprising of randomized word or number is given as input, followed by the steps of rearrangement to give the sequential output. The candidate is required to trace out the pattern in the given rearrangement and then determine the desired output step according to the asked in the question. So in the sequential output tracing, there is a type of a question. They had given you a message which comprise in the randomized word, or in the form of a number system. They will be given here in the form of numbers, and then you have to see the input, and of course following by the input you have to see the steps of the arrangement, that for the sequential output that they had given you, and according to that pattern what they had given you the rearrangements, so you have to determine that, and for that particular rearrangement you have to find out the desired output step that they had asked in the question here. So now we're dealing with the one question or questions that you will be able to understand what it does mean and how do you solve this type of a question where the sequential output tracings are there. Now the question number 1 for the sequential output tracing is, a word arrangement machine, when given an input line of words, rearrange them following a particular rule in each step. The following is an illustration of input and the steps of rearrangement. So उन्होंने बोला एक वर्ड ऑफ अरेंजमेंट मशीन है जहाँ पे आपको एक गिवन इनपुट दिया हुआ है लाइन में, और उसके बाद उसको रीअरेंज किया गया फॉलोइंग पर्टिकुलर रूल्स के साथ, और हर एक स्टेप को आपको इलस्ट्रेट करना है, इनपुट एज इनपुट बताया गया स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट. ये क्वेश्चन आपका जो है वो SBI बैंक PO में पूछा गया है, SBI PO का क्वेश्चन है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इनपुट को पहले कंसिडर करते हैं. व्हाट इज इनपुट दैट है दे हैड गिवन यू? इनपुट है एज इफ it on an zoo figure in at. This is an input they had given you here. Now talking about the step 1 here. The step 1 is an as if it on zoo figure of in at. Basically zoo के पहले जो ये an है वो आपका सबसे पहले पहुंच गया step 1 में. In the step 2, and as at if
it on zoo figure of in. So ये जो सेकेंड आपका एड था लास्ट वाला वो आपका as के बाद चला गया. Now in the third step here, and as it figure if it on zoo of in. So basically अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये जो ये फिगर देख रहे हैं आप, ये आपका एट के बाद थर्ड प्लेस पे पहुंच गया. स्टेप 4 में देखेंगे एंड एज एट फिगर इफ इन इट ऑन जू ऑफ इन. तो ये जो इन है वो आपका इफ के बाद पहुंच गया. In the step 5, and this is the last step here, and as at figure if in it off on zoo. ये off जो है वो आपका on से पहले पहुंच गया. This is the pattern that they are following in the various steps where it is given as input, and the step 1 in this, step 2 the variation, step 3 variation, step 4 and a step 5 they had a variation rearrangements of the statement by their following words. Now the step 5 is the last step of this input. As per the rules followed in the above steps, find out in the given questions the appropriate step for the given input. They had asked you about the given input, and here the first question for this is which of the following will be step second for the given input. Given input के लिए step second क्या होगा? तो स्टेप सेकंड क्या होगा, इनपुट देखते हैं पहले. इनपुट है आपका am is all if is. This is an input that has been given in this question. They had given you input and आपको सेकेंड स्टेप के फॉलो आउट करना है. तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, सेकेंड स्टेप में हुआ था कि जो ये एट है वो आपका थर्ड प्लेस पे आ गया था. तो इसके हिसाब से अगर इज है तो वो थर्ड प्लेस पे फिर आना चाहिए. इस तरह से अगर होगा तो लेट्स सी एस all am if is all am I is if, and all am is if is. So this is the pattern, but clearly we have see that clearly in the given arrangement of the words have been arranged alphabetically in in sequences alternating in the positions of other the word of each step here. And with clearly we have am is all if is. So this is an input that they had given you. So first step hoga is am all if is, and the step 2 hoga is all am if is. So the answer will be option A, that is all am if is. So this is will be the right answer. Okay, so this is a method to solve this step conclusion where you are solving the sequential output tracing. You have to be very careful when you are solving all these questions. Now moving on with the next one that we have with reference to this next question. So here in the question number 2, the input is given. Input is given is you are at fault on this. You are at fault on this. This is an input. They had asked you which of the following step would be. आपको बताना है कौन सा following step होगा ये. Are at fault on you. तो you are at fault on this. जो पैटर्न हमें स्टेप्स दिए हैं रीअरेंजमेंट्स के, उसी के बेसिस पे आपको बताना है are at fault on you this ये कौन सा स्टेप होगा. ऑप्शन ए है सेकेंड, ऑप्शन बी है फोर्थ एंड ऑप्शन सी है थर्ड. If according to this the input are you are at a fault on this, ये दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेप होगा इसका are you at fault on this. स्टेप 2 होगा are at you fault on this. स्टेप 3 होगा are at fault you on this, and अब स्टेप 4 होगा are at fault on your this. तो जो आपका ये आपका है तो स्टेप 4 होगा वो आपका होगा. So this will be your fourth step according to the input that they had given you here. Now the next one, the third question for the sequential output tracing is input they had given you him and his, either or her. So basically him and his, either or her, this is an input that they had given you. In the question they had asked you which step will be the last step of the input. तो last step input का कौन सा होगा. तो लास्ट स्टेप इसका लास्ट स्टेप कौन सा होगा. द ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है थर्ड. तो वेयर इन द केस ऑफ दिस क्वेश्चन हिम एंड हिज ईदर और हर ये इनपुट हुआ. स्टेप 1 होगा एंड हिम हिज ईदर और हर. स्टेप
फिर स्टेप 2 होगा and either him his on her, and स्टेप 3 होगा and either her him his or. तो ये 3 स्टेप होंगे. Since all the words in the given input have been arranged in the alphabetical order until the step third, so the third step will be the last step here, and for that case we have an option C, that will be the right answer here. Now moving on with the next one, that we have a question number 4, that is step 4 was like this: an apple at caught was red on one side. This is the step 4 they had given you. Which of the following will definitely be the input? तो अब बोला गया स्टेप 4 दे दिया गया, अभी तक इनपुट दे दिया जाता था तो पूछा जाता था फोर्थ स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, बट अब उन्होंने फोर्थ स्टेप दे दिया और अब आपको फाइंड आउट करना है कि इनपुट क्या होगा. तो ऑप्शन है was cut red on and on at one apple side, and the B option is cut and at apple was red on one side. So with respect to this, the tracing out the output step for the given input, we find that the step 4 that is as same as this, because if input would be was was caught red and on at one apple side, then the step 1 is and was caught red on at one apple side. Step 2 will be an apple was caught red on at one side. Step 3 will be an at apple at was caught red on one side, and step 4 will be an apple at caught was red on one side. So with reference to that, your what that has you ask about input. So input will be was red and as and on at an apple one side, and then option A will be the right answer for this question here. Now moving on to the next one, that we have here question number 5, and the question number 5 is: an electronic device when fed with the numbers rearrange them in a particular order of following certain rules. The following is a step-by-step process of rearrangement of the given input of numbers. This question has been asked in the bank PO question paper, and the question they had given you in the sequence, the input they had mentioned you here is 85, 16, 36, 04, 19, 97, 63, 09. This is an input they had given you here, but according to that the step 1 is 97. 97 जो कि सबसे लार्जेस्ट था वो यहाँ पे आ गया. उसके बाद आपका आया 85, 16, 36, 04, 19, 63, 09. in step 2 what it is 95, 85 वैसे ही रहा. फिर इसमें सबसे जो बड़ा था 63 वो आ गया थर्ड स्टेप में. फिर 16 ये शिफ्ट हो गया इसकी जगह पे. फिर 36, 04, 19 एंड 09 वैसे ही सिमिलर रहा पैटर्न. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप थर्ड में क्या हुआ, स्टेप थर्ड में हुआ 97, 85, 63 तो हो ही था. फिर 16 था, ये 36 था, ये इसके साथ रिप्लेस हो गया तो 36 पहले आ गया. फिर 16, फिर 04, देन 19 एंड देन 09. उसके बाद फिर आप देखिएगा तो 90 स्टेप 4 में 97, 85, 63, 36 सेम एज. अब ये 16 है, ये 04 है, 19 है, 9 है, तो 19 पहले आ गया, 16 बाद में चला गया. तो ये थोड़ा इस तरह से रिवर्स हो गया. तो उस हिसाब से 19 आया, फिर 16, 04, 09. फिर स्टेप 5 जो कि लास्ट स्टेप है 95, 85, 63, 36, 19 एंड 16. फिर ये आपका 9 और 04 कोलैप्स 09 एंड 04. For the given input, step 5 is the last step here. Now the question they had asked you here, so they had asked you which of the following will be the step 5 for the given input. इस input के लिए step 5 क्या होगा, and that is 25, 08, 35, 11, 88, 67 and 23. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े से छोटे तक की सीक्वेंस जा रहा है, तो उसके हिसाब से पहला तो इनपुट आपका यही हो गया 25, 08, 35, 11, 88, 67, 63. फिर उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा वो 88 पहले आ जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा 88, फिर 25, फिर 05, उसके बाद 35, 11, 67, 23. उसके बाद फिर आपका जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा फिर 88, 67, 25, 08, 35, 11 एंड देन 23.
फिर थर्ड स्टेप आपका होगा 88 67 35 25 08 11 23। फोर्थ स्टेप होगा 88 67 35 25 23 08 11 एंड फिफ्थ स्टेप होगा 88 67 35 25 23 11 एंड 08। तो इन द केस कि वो ऑलरेडी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ओके तो इस वजह से तो हमारा जो फिफ्थ स्टेप होगा वो सबसे पहले हमारा होगा 88। तो यहाँ पे 08 है तो ऑलरेडी हमें देख के समझ में आ रहा है ये नहीं होगा। 88 67 35 25 23 11 08। तो ऑप्शन बी will be the right answer and this question has been asked in the bank PO question paper. Now moving on with the next one that we have here with reference to this only. This is the question number 6 here. Which of the following will be the step third for the given input? Step third कौन सा होगा given input के लिए? Input है 0 9 25 16 30 32 19 17 and 06। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये तो इनपुट ही रहा 0 9 25 16 30 32 19 17 एंड 06। बट स्टेप वन में होगा 32 जो कि यहाँ पे बड़ा है तो वो सबसे पहले पे आ जाएगा। तो 32 0 9 25 16 30 19 17 06 हो जाएगा। स्टेप टू में 32 के साथ 30 भी आगे आ जाएगा तो 32 30 0 9 25 16 19 17 और 06। फिर स्टेप थ्री में 32 होगा, 33 ऑलरेडी था, फिर 25 है यहाँ पे तो 25 भी थर्ड पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से सीक्वेंस जो बनेगा 32 30 25 0 9 16 19 17 एंड 06। दैट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए 32 30 35 29 0 16 19 17 06 एंड बी ऑप्शन है 32 09। तो ये तो होगा ही नहीं। 10 30 35। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Now moving on with the next one that we have a question number 7. Which of the following will be the last step of the following given input? इसका last step कौन सा होगा? इसका 16 है, 09 है, 25 है, 27 है एंड देन 06 है और 05 है। तो ये आपका एक इनपुट है। इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इनपुट 16 09 25 27 06 05 है। तो पहला स्टेप में तो 27 आगे आ जाएगा तो 27 16 09 25 06 05 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में 27 25 16 09 06 05 हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो उसका जो लास्ट स्टेप होगा वो सेकंड स्टेप होगा। ओके तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, पैटर्न को समझना है, देन क्वेश्चन को एनालाइज करना है। बिकॉज ये क्वेश्चन इजी भी होता है और एज वेल एज टफ भी होता है। बिकॉज इट टोटली डिपेंड अपॉन कि आपने पैटर्न को समझा है कि नहीं समझा है। अगर आपने पैटर्न को समझ लिया है तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट। बट अगर पैटर्न को नहीं समझ पाए आप क्वेश्चन के तो दैट विल बी टफेस्ट ऑफ कोर्स। सो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, एज आई टोल्ड यू फ्रॉम द फर्स्ट बिगनिंग क्लासेस, कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा शार्प हो गया आप रीजनिंग में। Now moving on to the next one that we have your question number 8 here. Which of the following will be the last step for the given input? अब आपको बताना है लास्ट स्टेप इस पर्टिकुलर गिवन इनपुट का क्या होगा। ऑप्शन इनपुट पहले देखते हैं। इनपुट आपका है 03 31 43 22 11 एंड 09। ऑप्शन है फिफ्थ, ऑप्शन बी है फोर्थ। तो लेट्स सी कि कौन सा वाला होगा। उसके हिसाब से अगर 03 के सीक्वेंस के बाद इनपुट तो 03 31 43 22 11 09 है। स्टेप वन में क्या होगा 43 पहले आ जाएगा तो 43 03 31 22 11 09 हो जाएगा। स्टेप टू में 43 31 03 22 11 और 09 हो जाएगा। फिर स्टेप थ्री में अगर हम बात करते हैं तो 43 31 22 03 11 और 09 हो जाएगा। स्टेप फोर में 43 31 22 11 03 09 होगा। फिर स्टेप फाइव की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप फाइव में 43 31 22 11 09 और 03 हो जाएगा। तो उस तरह से हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेप फाइव में सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है 5 और ऑप्शन बी है 4। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। So here is a question number 9. If the step 4 is as given below, which of the following was the input? तो step 4 जो आपका given है तो उसके हिसाब से following input क्या होगा। step 4 है आपका 92 86 71 69 15 19 06 63 and 58। ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए है 86 92 69 71 15 19 06 63 58 एंड ऑप्शन बी है आपका 15 19 06
एंड देन 63, 58, 60, 86, 92, 69, 71। तो उन्होंने बोला इफ द स्टेप 4 इज ए गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इनपुट। तो अगर स्टेप 4 ये है आपका, तो आपको बताना है कि इनपुट क्या होगा इन दोनों में से। तो कोई बात नहीं, हमें पहले तो इनपुट जस्टिफाई करना है कि इनपुट क्या होगा। तो उस हिसाब से अगर स्टेप 4 ये है, तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, जस्ट लाइक स्टेप 4 इन्होंने बोला यहाँ पे 92, 86, 71, 69, 15, 19, 06, 63, 58। तो उससे पहले स्टेप 1 क्या स्टेप 3 क्या होगा? 92, 86, 71, 15, 19, 06, 63, 58, 69। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? 92, 86, 15, 19, 06, 63, 58, 69, 71। और स्टेप 1 होगा आपका 92, 15, 19, 06, 63, 58, 86, 69, 71। तो इनपुट उस हिसाब से होगा 15, 19, 06, 63, 58, 86, 92, 69, 71। तो 15 वाला सीक्वेंस होगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। तो उस तरह से आप कर सकते हो, बट जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज़ उसको कोशिश करा करो कि नोट डाउन कर लो, तो तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एंड इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू जस्ट इन्फॉर्म ऑन अ कमेंट सेक्शन, आई विल बी राइटिंग डाउन all the steps there. Now moving on with the next one that we have here is question number 10 that we have here is question number 10 है a word arrangement machine when given an input line of words rearrange them the following a particular rule in each step. The following is an illustration of an input and the steps of rearrangement. So here this question has been asked in the SBI PO question paper. The input they had given you here is go for to, throw, by, easy to, access, at. They had given you this input. Then they had given you the sum of the following steps here. The step 1, access, go, for, to, do, by, east, to, get, easy to get. And the second step दिया है access to, go, for the do, by, easy to. Step 3 दिया है access, at, by, go, for the do, easy to. Step 4 is access, at, by, easy, go, for the do, to. And of course step 5 they had given you access, at, by, easy to, go, to, do, to. And step 6 they had given you access, at, by, easy, for, go, do, to. And of course the step 7 access, at, by, easy, for, go, do, to, and to. So they had given you the steps of pattern, that according to that you have to understand the pattern and you have to answer the question, the following question what they had asked you. So this is the sequence of pattern as you had gone through with. access तो फिर A है, फिर G है, उस हिसाब से A B E F D D and T. तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस चल रहा है। ओके, तो लेट्स सी कि हमारा क्वेश्चन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आंसर करेंगे। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द SBI क्वेश्चन पेपर. Now moving on with the next one that we have with reference to the question here with this question. And step 7 is the last step of for this input. As per the rules followed in the above step, find out in the given question the appropriate step for the given input. The input they had given you is story for around on was he at. So they had asked you which of the following will be the step 4 for the given input. ये एक input दिया है story for around on was he at. इस input के through आपको step 4 बताना है. Options देख लेते हैं. Option A है around at for he, story on was. And step B1 option that is around at for he on straw way. So basic was. So basically according to this, तो पहला step जो जैसा कि input दिया हुआ story for around on was he at. स्टेप 1 होगा, अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो ए आपका अराउंड है जो वो स्टेप 1 में पहले आ जाएगा. तो अराउंड स्टोरी फॉर ऑन वॉज ही एट. स्टेप 2 में अराउंड के बाद एट अल्फ़ाबेट है तो एट हमारा जो है वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा. तो उस हिसाब से अराउंड एट स्टोरी फॉर ऑन वॉज ही. फिर थर्ड स्टेप में उसके बाद स्टोरी के एस है पर एफ जो है वो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए के बाद आता है. तो थर्ड स्टेप में हो जाएगा अराउंड एट फॉर
स्टोरी ऑन वॉज ही, एंड उसके बाद एफ के बाद एच आता है, तो ये स्टोरी के जगह पे आपका ही आ जाएगा। तो फोर्थ स्टेप होगा अराउंड एट फॉर ही स्टोरी ऑन वॉज। तो बेसिकली अराउंड एट फॉर ही स्टोरी ऑन वॉज, अराउंड एट फॉर ही ऑन स्टोरी वॉज नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट विल बी द राइट आंसर। Now moving on with the next one that we have here, the 11th question of this. The input they had given you every and pure, to and for. So basically they had given you every and pure, to and for. The question is which of the following step would be and every for pure to. Option A है second, option B है third, and option C है fourth आपका। So, to and for, the question is which of the following steps would be and every for pair 2. The option A is second, B is third, and C is fourth. So, with reference to this, every and pair 2 and for, इसके लिए अगर मैं बात करती हूँ तो आपको बोला गया and every फॉर पेयर टू, ये कौन सा वाले में बनेगा। तो स्टेप वन में अगर हम अल्फाबेटिक चलेंगे तो ये जो एंड है वो पहले में आ जाएगा, तो एंड एवरी एंड पेयर टू फॉर हो जाएगा स्टेप टू में। एंड फिर ये एंड दिख रहा है आपको, तो उसमें हो जाएगा and the options we have here is option A is second, option B is third, and option C is fourth. So every and pure and for, इसके लिए अगर हम बात करते हैं then the first step will be an every and pure to for, second step will be an and every pure to for, and third step and every for pure to. So the third step will be the end of this, and every for pure to, ये हमारा third step होगा। Okay, now moving on with the next one that we have here is your 12th question, that is input that we have here is together over series on feast the soul. So together over series on feast the soul, which of the following step will be the last but one. Basically you have to tell no last but one. The option A is second, option B is third, and option C is the fifth. So where the if input is together over series on of feast the so, a step one will be feast together over the series on the so, second step will be feast on together over the series the so, and the third step will be feast on over together series the so, and step 4 feast on the over series together it's being so, and then a fifth is your feast on over series on together the, and of course the sixth step we have is your feast on over series so that the together. So basically the step 6 is the last step, and the fifth is the last but one, that is the second last. So they had asked you about the last but one, last but one, total तो step इसमें 6 हैं, but last but one का मतलब होता है second last। तो language को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। last but one का मतलब होता है second last, तो second last will be the fifth step, and here the option C will be the right answer।
Now moving on with the next one that we have here, 13th question. Input is given that over go for throw at 1, and which a step number will be the last step of the above input. इस input का last step क्या होगा? Option A है none of these, B is third, and C is of fifth. So with this respect, the question over go for throw at 1, the step 1 will be at over go for throw 1, step 2 will be at for over on through 1, and step 3 will be at for go over through 1, and step 4 will be at for go 1 over through. And this is the steps of 4 total steps that we have is 4, and the last step for this input will be 4, and option they had given you none of these, third and a fifth, though of course fourth is not mentioned here, and that for that sake the reason will be option A, that is none of these here. Now moving on with the next one that we have here, 14th question. The step second of an input as follows. Step second आपका है and do get to on that. Which of the following would be definitely be the input? इन दोनों में से आपका कौन सा input होगा? Option A है do on pet to on that, and B is none of these. So basically if we are talking about this type of question, clearly none of the given input are given in the desired output of the second step, that the arrangement that we have, and for that sake we have an answer here is none of these, that is option B will be the right answer. Now moving on with the next one, that is your question number 15, and that is the admission ticket for an exhibition bears a password which is changed after every clock hour based on the set of the word chosen for each day. The following is an illustrations of the code and the steps of rearrangement of the subsequent clock house. The time is 9 a.m. to 3 p.m. This question has been asked in the bank PO question paper, and here it is that the reference to this particular question we have reference here is, here they had given you some arrangements there. Days first password, day first password है आपका first batch का 9 AM से 10 AM वालों का, that is not ready cloth simple harmony burning. सेकेंड बैच जो होगा डे फर्स्ट का, उसमें 10 AM से आपका 11 AM के लिए रेडी नॉट इज क्लॉथ बर्निंग हार्मनी सिंपल. थर्ड बैच के लिए 11 AM से 12 noon, दैट इज क्लॉथ इज नॉट रेडी सिंपल हार्मनी बर्निंग. फोर्थ बैच जो है आपका 12 noon से 1 PM, दैट इज नॉट इज क्लॉथ रेडी बर्निंग हार्मनी सिंपल. एंड द फिफ्थ बैच के लिए आपका है 1 PM to 2 PM, and that is ready cloth is not simple harmony burning, and so this is the fifth coding that they had given you, the password they had given you for the first batch, second batch, third batch, fourth batch, fifth batch respectively. Now they had asked you if the password for the first batch was rate go long drop we let have, which batch will have the password go rate top long have let me. ऑप्शन ए है फोर्थ, ऑप्शन बी है थर्ड, एंड ऑप्शन सी है सेकेंड. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट बैच विल बी द रेट गो लॉन्ग टॉप वी लेट हैव. The second batch that it could be long go rad top half let v, and the third batch के लिए होगा top rate go long we let have, and the fourth batch के लिए होगा go rate top long have let v, and that will be for the fourth batch के लिए होगा, and then option A will be the right answer here. Now moving on with the next 16th one, that is days first password. If it is camel road no twice say me not, what will be the password for the fourth batch, that is known to that is 12 noon to 1 PM, and option A है आपका no road a camel toy not me say. Option B है reach camel toy not no not me say. So here the question you can say that first batch के लिए होगा camel road no toy say me not, and the second batch के लिए no road camel toy not me say, and the third batch के लिए toy camel road no say me not, and the fourth के लिए road camel toy not no not me say. So here the option B will be the right answer for this. Now the next one that we have here is 17th question, that if the batch 2 of the day has a password came along not or else key a lot, and what would be the password for the both fourth batch 4, that is 12 noon to 1 PM. Option A है along it or come else key lot,
and the B1 or not net along come lot key else here. And for this the second batch का अगर हम बात करते हैं came along net or else key lot, थर्ड के लिए अगर है आपका थर्ड बैच के लिए or not along came lot key else, then फोर्थ बैच के लिए होगा along net or came else key lot here. So in the case of the option A will be the right answer. Now the last question for the session that we have here is the 18th question. If the password for 11 a.m. to 12 noon was soap shy miss pen yet the she, what was the password for the first batch here? And the option we have here, pen miss shy soap she the yet, and B here she miss pen soap yet the she. And here for this you can see that the third batch के लिए soap shy miss pen yet the she, second batch के लिए pen miss shy show soap she the yet, and the first batch के लिए होगा shy miss pen soap yet the she. So here the option B will be the right answer for this question, and this question has been asked in the substitutive SBI PO question paper whereas bank question paper. तो क्लास आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video. And like अगर जिन्होंने हमारा सब्सक्राइब किया है चैनल, जो कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सो थैंक्स फॉर दोज हु हैड सपोर्टेड अस. एंड जो भी हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, बिकॉज इससे हमें थाउजेंड से मिलियंस में लेके जाना है, तो बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो सकता. थैंक यू.